Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Okay, guys. Welcome everybody to the session. First of all, we'll start. As you know, the topic is breaking into cybersecurity as a SOC analyst. The whole idea is about. First of all, if you are not, because we send an invitation to multiple groups, so if you're not aware about Gispp, let me introduce ourselves a little bit. Gispp is a group of information security professionals, Pakistan information security professionals who are working around the world. So we have members in different countries of the world, in Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, in Europe, in different countries of Europe, in America, in Canada. So it is just like a bunch of Pakistani people who are in different places, who are working together to share knowledge, to do discussions, and to support each other. Okay? On the same platform, we are doing this session. The idea of this session is to introduce cybersecurity, plus there's a specific role called, there's a specific thing called Security Operations Center, SOC. And the SOC has, these days, many companies, they are, promoting themselves, they are being more focused on cybersecurity. So they are having Security Operations Center. So our idea is to, and there are many job opportunities all over the world, including Pakistan, also India, also other places, like wherever we have the people. So, and I know we have some participants from India also, so it will be useful for them as well. So the idea is to introduce about SOC, what is Security Operations Center, what kind of jobs are available, how you can prepare yourself, okay, and it will be like it's a good opportunity for the people who are students, who are in the final year of the studies, to know what is out there, what kind of roles, jobs they can get, and how they can improve themselves. मोड हमारा जो है इंग्लिश भी होगा, उर्दू भी होगा. मोस्टली हम उर्दू पे बात करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तान से है और दूसरे भी मतलब है, तो दोनों हम, लेकिन हमारी जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में है. तो विल स्टार्ट नाउ. तो हमारे स्पीकर्स जो हैं आज हमारे पास, हमने अब ज़्यादा स्पीकर्स नहीं किए, हमने सिर्फ 2 लोगों के साथ किया ताकि हम ज़्यादा फोकस कर सकें. सैयद इसाक बुखारी हैं हमारे साथ, ये पाकिस्तान में इब्रिक्स में काम करते हैं, इस वक्त ये एक जर्मनी में है, अभी अपना वो इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे. और मोहम्मद वलीद खालिक हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, लाहौर से, और ये इस वक्त सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं एज ए SOC मैनेजर, एज ए मैनेज सिक्योरिटी SOC प्रोवाइडर. तो अभी हम इस सेशन को अरेंज करने में मेरे साथ साजिद कैनी ने बहुत काम किया है. ही इज ऑन द बैक एंड, करंटली ही इज को-होस्टिंग द सेशन विद मी. साजिद, थैंक यू अ लॉट. सो विल स्टार्ट. इसाक साहब, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, और फिर वलीद, देन वी विल स्टार्ट द सेशन. थैंक यू. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I'm really surprised to see so many people showing up for this talk on a weekend. I can see 55 participants, so thank you so much for taking out time for this talk. My name is Syed Ishaq Zafar. Right now, I'm working for a tech company in Germany. I'm leading their security operation. Previously, I've been working in various roles. I started my career being a pen tester, then I went to being a level 1 SOC analyst, then level 2 SOC analyst, lead security engineer. At one point, I was managing a team of 44, which I helped, headhunt, recruit, mentor, and build. So you can say I have some background in hiring and making teams, and especially for MSSP businesses and for these security roles. So so this is something which I've been saying over time while filling for these positions in my previous roles. There is an obvious talent shortage, as you know, but also people don't really understand what it takes to be a SOC analyst. ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि I went to Karachi, for example, to do a recruitment drive. And with my HR, thanks to him for this much patience, 2 या 3 दिनों में हमने 80 इंटरव्यू किए, 90 इंटरव्यू किए, and we ended up only shortlisting 3 to 4 candidates, और उसमें से भी हमने 2 को ऑफर दी.
तो ये एक रेशो है हमारे ग्रेजुएट्स के अंदर, हमारे यंग प्रोफेशनल्स के अंदर, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, और एक मेरी पर्सनल कॉज भी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो एक एकेडमिया इंडस्ट्री गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडली, जब हम कुछ कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट कर रहे थे पिछले 2-3 साल के अंदर, तो स्पेशली बैंक्स के साथ बहुत काम किया हमने एक्सटेंसिवली. So that is another data point where I see there's a lot of there are a lot of jobs, and then the churn rate is really high, but there are not enough security guys to fill all those positions. So it's not just it's not just hiring for MSSP, but also for enterprise networks, in banks, in telecos, in tech companies, and especially there's one thing which I want to focus, and that's why you would see me referencing a lot of things about AWS infrastructure, cloud-based infrastructures, and their monitoring, their SOC system. अभी जितने भी टेक कंपनीज आ रही हैं वो AWS के ऊपर होस्टेड हैं, और बहुत तेज़ी से ये जो हमारा मॉनिटरिंग का पैराडाइम है वो शिफ्ट होता जा रहा है ऑन प्रेम या जो कन्वेंशनल डेटा सेंटर्स थे उससे क्लाउड के ऊपर. तो इसी तरह से हमारी जो सॉक की ज़रूरियात हैं, जो हमारी सॉक का स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसको भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है. सो उसका भी एक टच देने की कोशिश करेंगे. सो आई विल टेक अ ब्रेक हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी, दिस टीम, स्पेशली सुभानी भाई. ओवर टू यू, वलीद. Assalamu everyone. Okay, my name is Muhammad Walid Khali. Okay, I think so. Subhani Bhai has already given a small introduction about me. Basically, I'm working in Saudi Arabia, in Riyadh, especially in Riyadh, capital city, in one of the renowned service providers. Okay, and I'm heading the department SOC managed services department. Basically, we are providing SOC services to the government entities and plus the enterprise. Okay. The reason के हमने basically जैसे आपको already साहब ने बोला कि the reason to conduct the session and like joint venture with Mr. Subhani, क्योंकि I really appreciate them कि उन्होंने जो है ये basically platform दिया to speak out something or to give a good understanding about how the SOC is, what is SOC, and how this skill set is emerging into the market. ठीक है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे जो हमारे अपने कंट्री पाकिस्तान जैसे हैं. ठीक है, what I can see is like we have shortage of skills in our country. ठीक है, even I don't know, I don't think so, like still we are competing with the with the globe. Okay, so हम लोगों को what we need is like to enhance the skills. ठीक है, but definitely उसके लिए you need a guideline. The reason to have this session is like to give you a guideline how to start your career in this field, because this is the most emerging field at the moment. Okay, and or what I can forecast is like in the next 10 years probably or 15 years still it will go on. Okay, हाँ enhancements आएंगी, बिल्कुल आएंगी, इसमें आएंगी, इसी फील्ड में आएंगी. ठीक है, लेकिन वो टाइम बाय टाइम आएंगी. But this is the right time to jump and to start the career. Anyways, my portfolio is like I'm handling different customers. Okay, we are providing MSSP many service provider services to the customers. Okay, और उसके हमारे different customers होते हैं at a time. Okay, and we are one of the renowned service providers. Okay, and I'm managing the teams. My job role is like to managing the teams. Okay, managing the infrastructures and plus managing the deployments and also supporting some of the DFIR activities, malware activities. Okay, stuff like this. Okay, so this is my introduction. So I think so already Isaac has spoken a lot about the detailed information. So I think so probably Mr. Subhani, you can continue. Okay, we'll start now. Go next. Okay, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सेशन के हवाले से, जो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले हमने SOC के बारे में लोगों को बताना है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या होता है और उसमें एनालिस्ट का रोल क्या होता है. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और इसके अलावा ऐसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो अभी IT में है या जो अभी जिन्होंने करियर स्टार्ट किया है, 1 साल या 6 माह, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल काम किया है, और वो चाह रहे हैं, क्योंकि IT में तो बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, मतलब जैसे एक नॉर्मल उसमें होता है. तो ऐसे लोग जो चाहते हो अपने आप को थोड़ा सा स्पेशलाइज फील्ड में जाना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, उनके लिए है. तो दोनों किस्म के हैं. अगर हमारे पास इस वक्त हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी शेयर किया था, लिंक अपना भेजा था मीटिंग के, लेकिन अगर नहीं भी लोग ज्वाइन कर सकेंगे तो ये बाद में हमारा सेशन रिकॉर्ड होगा, तो वो फिर भी जाके उसको रेफर कर सकते हैं एट एनी टाइम इंशाल्लाह. ठीक है, तो हमारा ये है कि हम जो अपनी कम्युनिटी है, गिस्प कम्युनिटी, को उसको हम एकेडमिया से भी चाहते हैं इंट्रोड्यूस करना,
ठीक है, ताकि हम यूनिवर्सिटीज को पता हो कि यार somebody is out there who will guide them, इंशाल्लाह who will guide the students, क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स निकलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट होके तो उनको अक्सर नहीं पता होता है कि उनके लिए किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, क्या है मार्केट में, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उसको भी हमने कवर करने के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं ताकि हम उनको गाइड कर सकें और उनको पता हो कि somebody is out there। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये गिस्प का शुरू किया है, थोड़ा हम पुराने हो गए, तो अब बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी अप्रोच करते हैं, कई लोग गाइडेंस के लिए करते हैं, पर्सनली भी करते हैं, उनको मैं ग्रुप में भी लेके आता हूँ। तो मकसद यही है कि आप अपना एजुकेशन पे जोर दें, लेकिन उसके बाद जब आपको जॉब से पहले आप हमारे साथ इन टच हो, हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ गैप। जो आप पढ़ रहे होते हो, जो फील्ड में होता है वो फर्क होता है। अब आप जो पढ़ रहे होते हो, आप TCP/IP पढ़ते हो, आप प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो, ऐसी चीजें पढ़ते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका फील्ड में रोल क्या होगा। आप समझते हो शायद मेरा हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का कहाँ पे बेनिफिट है। तो ये एक मैपिंग होगी इंशाल्लाह ताला, आपको अंदाजा होगा कि इसका मैपिंग क्या है। अच्छा, इस सेशन से आप क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? जो हमारे 3 लास्ट आइटम लिखे हुए हमने, इस वक्त हम ये एडवांस लेवल का नहीं है, तो हम इसमें ये नहीं बताएंगे कि आप 100 को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि थ्रेट हंटिंग कैसे हो सकती है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि 100 के टूल्स कौन कौन से हैं। हाँ, फ्यूचर में होपफुली हम मजीद सेशन करेंगे इसी टॉपिक पे, ताकि हम और लोगों को बता सकें। हमने पहले भी कुछ सेशन किए थे अपने मेंबर्स के लिए, उसमें आप जाके देख सकते हो कि जैसे हमने स्प्लंक पे किया था। स्प्लंक इज अ वेरी गुड सॉक टूल, तो वो भी है इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 ही है, सॉक एनालिस्ट के हवाले से बात करेंगे और किस कम्युनिटी का आपको बताएंगे। सो विल नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गो नेक्स्ट। Ishaq, All right, so you can start. yeah, thank you. So so मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बता दूं कि we do not want it to look like some kind of one-way communication as a talk. So this is rather a discussion between the three of us, and you can also contribute. इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि we are kind of role playing right now, where Subhani Bhai is playing the role of a student or a fresh graduate or a young professional who is curious about all these questions. If there are any lucrative job in information security, especially SOC के अंदर कोई कौन सी job opportunities हैं, blue side of things में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, उसके लिए क्या preparation करने की ज़रूरत है, और क्या उसकी जॉब्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, पाकिस्तान से बाहर अवेलेबल है या नहीं। प्राइस पॉइंट्स एक वो चीज़ है, क्योंकि मैं भी हायरिंग करता रहा हूँ, वलीद भी हायरिंग करते रहे हैं, तो हमें विजिबिलिटी है प्राइस पॉइंट्स की डिफरेंट कंपनीज में भी, डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी, तो डिफरेंट रोल्स के लिए। तो हम आपसे वी कैन लेट यू इनटू दिस सीक्रेट पीस, और आपसे शेयर कर सकते हैं कि what are the different salary points that you should expect at different levels, and the career growth है वो भी हम डिस्कस करेंगे, career path इसमें क्या बन सकता है। there are 3 primary paths जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ जो मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ, ये this is not a vanilla presentation copy pasted from internet. So we have tried to keep it as practical as possible, as useful for anyone who wants to actually break into cybersecurity. So अगर आपको कोई इसमें चीज़ें समझ नहीं भी आ रही, तो there are a lot of further reading material that you can use. हमने हाइपरलिंक किया हुआ है, और ये कंटेंट भी आई थिंक शहजाद भाई शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, वलीद और गिस्प ऑफिशियल्स। वी ऑल्सो हैव अ डिस्कॉर्ड चैनल, वहाँ पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब पर्सनली मेरे लिए दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ माई लास्ट स्पीच विच आई डिड like a couple of weeks ago when B-Side Islamabad was taking place. So मैंने वहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे और बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि रॉ टैलेंट बग बाउंटी में बहुत सा पैसा कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, इसी तरह से फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर HCL जैसी कंपनीज बन सकती हैं और विप्रो जैसी कंपनीज बन सकती हैं, और वो अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। सो ये वो तमाम सवालात हैं जिसको हम कोशिश करेंगे इसमें आंसर करें, और वो हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं ताकि लोग तैयार हो सकें, एक मैस लेवल पे तैयार हो सकें। स्पेशली जो पाकिस्तान में कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए एक पूल बन सके
जिसमें if somebody wants to leave the company and go out and work onto some other companies or opportunities which they think are going to be beneficial for them, they should be able to do that without causing any wreckage to the business continuity. So there should be an enough pool in the country itself जो कि local जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करे. आशुमान भाई आपको थोड़ा आगे करना पड़ेगा slides को. Sure. All right. So इसमें कैरियर भी हम डिस्कस करेंगे इन्फोसेक में कौन कौन से हैं. सो देयर आर 5 or 6 प्राइमरी वर्टिकल्स और डिसिप्लिन्स. इसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, डिफेंसिव है, फोरेंसिक्स है, इंसिडेंट रिस्पांस भी उसमें इसका पार्ट हमने यहाँ पे बनाया है, रिस्क एंड कंप्लायंस है, देन ट्रेनिंग एंड मिसलीनियस है. इस तमाम रोल्स को आगे हम देखते हैं. जी प्लीज आगे कीजिएगा. ऑलराइट. सो जब सिक्योरिटी ऑपरेशन के जॉब्स की हम बात करते हैं, सो दिस इज वन ब्लू एरिया जिसकी ब्लू साइड ऑफ थिंग्स है, जो डिफेंसिव रोल्स हैं उन पे हम बात करेंगे. उसमें सॉक एनालिस्ट है, सॉक इंजीनियर, सॉक मैनेजर, सिम स्पेशलिस्ट, एमडीआर एनालिस्ट, थ्रेट हंटर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड डेवसेकऑप को भी हमने इसमें कैटेगराइज किया. Now this is important to understand. These are not coming out from some this is not any hard and fast rule. There is no standard which says कि ये तमाम जॉब होनी चाहिए इस रोल्स को. So इसको ऐसे समझें कि ये एक सुपर सेट है जो हमने JDs में से एक्सट्रैक्ट किया डिफरेंट रीजन के अंदर. मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रीजन और जो यूरोपियन रीजन है वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वहाँ पे क्या कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये वो रोल्स हैं. आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हर रोल को से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉयर की, उसमें आपको क्या करना पड़ता है और उसके लिए अहल होने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो भी हम आगे शेयर करेंगे. इसी तरह से वलीद ने जो इसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम GCC के अंदर ख़ास तौर पे कौन कौन से रोल्स हैं. सो ऐसा नहीं है कि इसके बाहर रोल एग्जिस्ट नहीं करते या कुछ एक्स्ट्रा रोल अगर आपको दिख रहे हैं. सो दीज आर द मैक्सिमम रोल्स which can give you the visibility either to go for this particular job when you see a job offer or not. Okay, let's move on to the career progression. And okay, over to Zuban bhai. Let's do the question answer thing. I'm not sure if I can hear you. So sorry, I was mute. Okay, sorry. पहला सवाल जो है हमारा कि हमारे से काफ़ी सारे लोग से ज्वाइन किया हुआ है, हमें 65 पीपल हैं. तो अगर वो सोचते हैं कि जी बहुत सी फील्ड हैं जॉब के लिए, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए, तो AI में जा सकता है, डेटा सिक्योरिटी है, कई और फील्ड्स हैं, तो वो इसके लिए मतलब साइबर सिक्योरिटी ही क्यों, इसमें क्यों जाए, इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या स्पेसिफिक, इसमें क्या खास बात है? बिल्कुल सही. आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है. डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और भी इमर्ज कर रही हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को ही प्रेफर क्यों किया जाए. सो इसके 3-4 रीजंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं. एक तो पूरी दुनिया में शॉर्टेज है और इस तरह का शॉर्टेज किसी और डोमेन में इस वक्त नहीं है, और ये जो गैप है ये इंक्रीज ही हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा. आप जितनी भी स्टडीज़ देखेंगे, जितने भी सर्वेज देखेंगे. सेकेंडली, इट पेज गुड, और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर वर्किंग इन SOC और अगर आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ रही है या फिर वीकेंड्स पे काम करना पड़ रहा है, ये पब्लिक हॉलीडेज पे, तो आपको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलती है. अगर आप ऑन कॉल हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलती है. सो ये एक बिग मोटिवेशन है. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. बेसिकली अब साइबर सिक्योरिटी, व्हाई टू चूज द कैरियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली इट्स अ डिमांड इन द मार्केट. द रीजन व्हाई टू हैव अ डिमांड, ठीक है, डेफिनेटली देयर आर ऑर्गेनाइजेशन. अब चूंकि आपको पता है कि द मोस्ट वर्ल्ड इज मोस्टली going towards the automation, and basically they are going towards having more IT resources, and everything is going to be digitalized, okay, in the next era. Okay, definitely इस digitalization को basically cover और secure करने के लिए you need resources, and they are it's gonna happen like एक same जो है department जो है, if it's a network security department, they're gonna have work as a cybersecurity SOC analyst or something like this. Okay, so definitely अब जो है basically जो gap आ रहा है basically वो ये आ रहा है कि जो मॉनिटरिंग साइड या SOC, स्पेशली अगर साइबर सिक्योरिटी SOC की बात करें, ठीक है, तो SOC साइड के ऊपर रिसोर्सेज इतने कम है कि दे आर नॉट एबल टू फिल द गैप कि हम बेसिकली इस डिजिटलाइजेशन को हाउ टू सिक्योर देम एंड हाउ टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर एंटरप्राइज, और जो उसका बेसिकली
एंटरप्राइज का आप ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक यू कैन से enterprise basically. So the thing is that like to handle all these issues, okay, to understand okay how the hierarchy works, okay, how the infrastructure works, okay, to make them secure. The SOC is basically one of the part who contribute itself to in that position and come up with a proper guidance and to come up with the proper information that okay, these are the further steps you need to enhance and you need to fill your gaps. Okay, so over to you, Sayyid. चलिए अगले पे चलते हैं, अगले सवाल पे। हमारा किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? Sure. So जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हमने इसको डिवाइड किया डिफरेंट एरियाज के अंदर. So maybe I can take first three and Walid, you can explain the last two ones. So cyber information security is kind of a big umbrella जिसके अंदर cyber security भी आ जाती है और इसमें जो compliance वाली चीज़ें वो भी आ जाती हैं. So ये ज़हन में रखिए कि information security के अंदर बेशबहा roles available हैं. These are probably the maximum roles that you're going to see anywhere on the internet और ये exist करते हैं, ये कोई made up roles नहीं है और आप किसी के अंदर भी लैंड कर सकते हैं. इनकी different requirements हैं. There are some people who are afraid of programming, for example. There are some people who are not very good with automation or cloud stuff or more technical work. So there are other things that they can go to. Let's start from the right side of things. So typical pen tester vulnerability assessment जो आप देखते हैं ये एक रोल है. ethical hacker भी इसको कहा जाता है. इसको different नाम्स के साथ इसको सेल कर रहे हैं मार्केट में. और फिर रेड टीमिंग एक नई चीज़ आई है जिसके अंदर आप एक्चुअली इम्यूलेट करते हैं अटैक को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर. एक ये इसकी फॉर्म है जिसके अंदर फिशिंग सिमुलेशन भी हो सकती है जिसमें आप एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं जहाँ पे अपना पेलोड डिप्लॉय करके सिक्योरिटी जो टूल्स आपके लगे हुए क्लाइंट पे उनकी परमिशंस उसको बाईपास करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं अपनी टीम के लिए उसको अचीव करें. लाइक देयर कैन बी एन ऑब्जेक्टिव के आपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर एक फ्लैग है उसको लेके आना है. फॉर एग्जांपल इट कैन बी एन एडमिन अकाउंट, उसकी एक्सेस लेनी है, तो ये रेड टीमिंग एक्टिविटी है. बग बाउंटी हंटिंग आई थिंक ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. हमारे जो स्टार्टर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, दिस मेक्स मी वेरी हैप्पी कि they are finding their own way. So they would go to sites like Bugcrowd and HackerOne and वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक दूसरे को इंस्पायर भी कर रहे हैं. And there is a subculture going on in Pakistan जो कि सपोर्ट कर रहा है और इसको थ्राइव कर रहा है. Then auditor जो साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट से ऑडिटिंग होती है वो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं. एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट है, वल्नरेबिलिटी रिसर्च है. ये दो चीज़ें जो लास्ट में हैं ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं हो रही लेकिन वी होप के एक वक्त में ये भी हो रही होंगी. ब्लू साइड की हम बहुत डिटेल से आगे बात करेंगे, इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ. पर्पल के अंदर, so purple is kind of it's a combination of blue and red and hence the purple color. So these are the people who needs to know जब आप एक अटैक लॉन्च करते हैं तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ पे जाता है. आपने एक स्कैन लॉन्च किया है तो उसका लोड बैलेंसर पे क्या इफेक्ट होगा, क्या उसकी वैफ की लॉग में कुछ ट्रेस आएगा, क्या सर्वर की एक्सेस लॉग में उसका कोई ट्रेस आएगा. तो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे आपका अटैक जो है वो तमाम ट्रेसेस छोड़ रहा है. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी तो आप वो ट्रेल बिल्ड नहीं कर सकते जो आपको इन केस ऑफ इंट्रूजन या ब्रीच आपको बिल्ड करनी होती है. सो दीज आर द पीपल हु आर बेसिकली लॉन्चिंग सम कंट्रोल्ड वे में अटैक्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो help blue team write the detection content. It can be rules, it can be some IOAs or IOCs or any new technique which is not being covered by their SIM solution. SIM क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसमें जब एक दफ़ा इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई ब्रीच या हैक हो जाता है तो इंसिडेंट रिस्पांस टीम को इन्वॉल्व किया जाता है. अब इसमें डिफरेंट रोल्स हैं. पहला जो रोल है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का, इट्स फेयरली टेक्निकल. इसमें आप एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंसिडेंट को. इसमें एनालिसिस भी शामिल है, इसके अंदर ट्रियाज भी शामिल है, इसमें लॉग पार्ट्स करके आपने ट्रेल बिल्ड करनी है, आपने स्पेसिफिक कुछ एनोमलीज ढूंढनी है, वो तमाम चीज़ें शामिल है. उसके बाद एक रोल है इंसिडेंट हैंडलर का या मैनेजर का. दिस इज सेमी टेक्निकल. इट्स लाइक प्रोडक्ट ओनर ऑफ अ टीम जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करता है. इसने लीगल से भी बात करनी है. फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर डेटा था और GDPR की रिक्वायरमेंट होती है ख़ासतौर पर यूरोपियन रीजन के अंदर कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होता है जहाँ पे कस्टमर का डेटा लीक हुआ है या किसी तरह से किसी थर्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड पार्टी के हाथ गया है, तो यू हैव टू टेल द अफेक्टेड यूजर्स एज वेल एज लीगल इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम.
वरना आपको मिलियंस में पेनल्टी होती है। तो उनके साथ कैसे बात करनी है, पीआर के साथ उनको कैसे अपडेट रखना है, स्टेक होल्डर्स जो हमारे मैनेजमेंट साइड पे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उन सबको जो हैंडल करना है वो इंसिडेंट मैनेजर का काम है या इंसिडेंट हैंडलर का। उसके बाद जब इंसिडेंट क्लोज हो जाएगा तो फिर एक प्रैक्टिस की जाती है जिसको रूट कॉज एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, या फिर आप इसे समझिए कि दिस इज बेसिकली रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और एज एन आउटपुट एक पोस्टमार्टम डॉक्यूमेंट बनता है जो कि फिर सारे उस पर काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। पूरे इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर थ्रेट इंटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। हमें पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर कुछ कंट्रीज आपस में दे आर नॉट ऑन गुड पॉलिटिकल टर्म्स, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज ऑन ईच अदर्स सिस्टम्स, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं। तो अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी में काम कर रहे हैं, यू शुड नो कि आपके एडवर्सेस कौन से हैं जो अटैक कर सकते हैं, और उनके पास कौन कौन से मैलवेयर हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके जो C2 सर्वर्स हैं उनकी वो कहाँ पे होस्टेड हैं। तो वो तमाम चीज़ें थ्रेट इंटेल के अंदर आ जाती हैं। देयर आर कंपनीज जो कि थ्रेट इंटेल प्रीमियम सेल भी करती हैं। फिर पूरी इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर जो मैलवेयर अगर आप हंट करते हैं, सो अभी जो APTs की अगर हम बात करें ख़ासतौर पे, जो कि बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर होते हैं जो आम वायरसेस और वर्म्स या ट्रोजन्स की तरह नहीं होते, तो उनको आपको मेमोरी में से कई दफ़ा कार्व करना पड़ता है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो वो इस तरह के जो मैलवेयर्स हैं उनको एनालिसिस करना, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना, ये सेपरेट रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ फेयरली हाईली टेक्निकल। ओवर टू यू वलीद। Yeah. So after providing, like, then we have the green teaming and the white teaming. Basically, green teaming hota kya hai ki GRC analyst. GRC is more over into the compliance part. So governance, risk and compliance. This is one of the most important component as well with the SOC. ठीक है, क्योंकि SOC में basically what you're doing is like compliance monitoring as well, okay, because there are some regulatory requirements from the local bodies or from the end as well as from the international standards, okay, कि based on that आपने जो है basically अपने जो process and procedures हैं उनको comply करना होता है कि how you are working, how the incident management procedure is working, okay. So even के if you take the example of incident management procedure, it's also from the compliance part, okay. If I think so, most of the people, they have been through either 27001, that is one of the compliance standard, okay, related to information security management system, okay. Or iske alawa, then if you talk about the Gulf countries, countries like especially in Saudi Arabia, we have many other bodies like NCA, National Cybersecurity Agency is there, okay. Then SAMA, okay. अब उनके अपने frameworks हैं, उनके अपने basically regulation है, ठीक है, regarding to the information security, okay. Then you have to comply with it. And उसके अंदर होते ही कि in compliance regulators जो है basically ये SOC को जो है basically they do prefer SOC monitoring, okay. And अब current situation इस वक्त जो Gulf में चल रही है कि it's now getting mandate for every organization. See, financial sector is there and health sector is there, but even they are mandating to the enterprise sectors like to have the security operation center services either in-house or they can have a third party service from any other vendor who are providing inside Saudi Arabia. So that's why, as I told you, that there is a very big role play for government. Different roles in this IS implementer, okay, the guy who implements the information or either 27001 standard or any other standard related to information security, and then to check the compliance, okay. Then we have the compliance auditors, जो कि एक special interval base के ऊपर like 4 to 6 months or yearly they do the auditing of the department, that how the processes are going on and how to check the performance of the department, ठीक है. उसके बाद then we have risk analyst, okay, to identify the risk. So basically risk जो होते हैं ये तो it's in the start, okay, and it goes on daily basis, okay. So जरूरी नहीं होता कि basically risk analyst is a different guy comparatively to compliance auditor or okay or analyst, okay. होता है कि basically usually होता है ये कि देखा गया जो हम practically तौर पे market में environment में देखते हैं, हम जहाँ पे भी जो GRC department में basically जो analyst होता है या जो auditor होता है, sometimes they are doing the risk assessment as well for most of the organizations, okay.
So, but we have segregated all them into different job roles. You know, you will hired as a GRC analyst. Okay, so even GRC or the compliance is also a very booming. It's already very much boom, but still it's going on as parallel with the SOC environment as well. To know your risk and to know your how the performance. Okay, so this is a GRC department is on top of the SOC and or on top of the information security department. Okay, to know the performance, how they are performing. Okay, then we have white teaming. A white basically जो sector है उसके अंदर basically they would mostly इसमें solution architects or like architectural type of specialists are there, experts होते हैं, ठीक है, जो basically environments को design करते हैं, ठीक है, to understand all the requirements of the environment and design it accordingly. Okay, and then we have the trainers, advisor, insurance analysts, cyber legislators, and security product developer. Okay, so this role can there basically what we have is like there are different people, like even the pre-sales guys are there included in the pre-sales department, also included. Okay, because in the pre-sales department usually the people are there to architect the environment and provide them the requirements and provide them the design accordingly. Okay, so I think so we can forward to the next slide. So just to add on Wali's point, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही distinctive roles हर जगह exist करें. यहाँ पे हमने वो तमाम roles लिख दी हैं जो आपको job search के अंदर मिलेंगे. So there is a fair chance कि ये एक ही बंदा हो जो कि implementer भी है, auditor भी है, risk analyst भी है. It varies region to region and company to company. All right. Next पे move करते हैं अगली slide पे. All right. So ये है Cybersecurity Operations Center. Oh, ये तो बहुत आगे चले गए. Sorry, वो हाथ slip हो गया. This is just a view of Cybersecurity Operations Center. ये तो just take basically. Okay. This can be an ideal SOC center, but it could be less smaller. Depends on how big the organization is. और ये picture वैसे भी दिखाना चाह रहा हूँ कि the SOC people have probably the most fanciest offices in whole security domain. इनके पास बड़ी screens होती हैं, multiple screens होती हैं, बड़ी LEDs होती हैं, बहुत अच्छा furniture होता है. But it comes at the cost of yourself. उसमें आपको obsess होना पड़ता है इस काम के अंदर. But they have fancy offices. So just keep in mind if you like that. So maybe this is one motivation point for you. In my experience, even NOC has better offices than SOC actually. Okay. Because NOC is more, like they understand that our data centers. So SOC is sometimes they're not that good, not that fancy. चलें अब मेरी ना कम करना बुलंदारी. No, if you just compare. ऐसी बात नहीं है. नहीं ऐसी बात नहीं है. Just compare different companies. It depends on the budget. How much the company will be willing to totally agree. Just getting with okay, we'll go next. All right, let's move to the next one. Okay, Walid, do you want to? Okay, see, this is a SecOps center. Like, what exactly the security operations center is? Okay, so I can see one question out of the chat box. What about hybrid SOC? Okay, and so there are different kinds of. At the moment, the market has a trend of having previously when the SOC came into existence, the word came out. Okay, so होता ये था कि organization they prefer to have their own prem SOC and in-house SOC. ठीक है, उसमें होता ये था कि basically they develop their own department, they hire their own resources or they make their own setup and start working on it. Okay. But chunki SOC itself is an investment. Okay, it's not about only to have the service and just start running it. Okay, you need to have resources and everything. Okay, so SOC basically it's an investment. Okay, so अब होता ये कि organization जो है now they are moving towards another concept like MSSP concept. Okay, what happens in MSSP part? What happens in MSSP part? Like they
buy a service and they call it SOC as a service, okay, from any of the service provider, okay, and then they start working on it, and they have a business agreement or with the company or the service provider, like, okay, fine, we need this service for 24/7 and we pay you a certain amount. So this is what exactly going on at the moment. So the business of MSSP is booming in the market, okay, because it's painless for the any enterprise, it's painless for them, okay. So about currently what exactly the SOC operations or the security operations center works is like, they first of all, I would like to put one thing, I think so it's not in the slide, like there are 3 pillars of SOC, okay, and if one of the pillar is weak, you cannot run a successful security operations centers, like people, process, and technology. If you don't have the people, right people to work on the department, okay, that is one of the painful part, okay. If you don't have the right technologies and your technologies are not updated, this is the second part, and this is one of the second pillar, most important pillar. And the processes, okay, processes are used for the people to run the process, to work in the environment. If you don't have the proper processes, like if you don't have a proper incident management process, okay, so आपका जो analyst है, basically he will not be able to know that, okay, what I have to do next, okay, if he receive any kind of incident, what I have to do next, okay. So this is one of the major parts. So the processes have to be updated and aligned with your operations, so that it will be easy for the people, okay, to understand what to do at what time, okay. Over to you, Sayed, if you can continue. I want to add one thing here. So if I think their screen is getting messier, but I hope you can still see it. There is one point which I want you to take away from this slide. Why companies would have security operation centers. मतलब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाए क्यों जाते हैं जहाँ पे हम काम करेंगे. उसके कुछ मकासद हैं हर कंपनी के लिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप पे आप देखें नेटवर्क पेट्रोल, मतलब नेटवर्क भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है, वो भी मॉनिटर कर रही है सॉक बैठ के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. और डेटा लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड विद अदर डेटा सोर्सेज, ये आपकी कस्टम एप्लीकेशंस हो सकती हैं, होम ग्रोन सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या आपके थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो एंड पॉइंट पेट्रोल. सो जितने भी आपके यूज़र वर्क सेशंस हैं अमूमन उनको एंड पॉइंट कहा जाता है. तो उनकी जो कनेक्टिविटी है या उनके ऊपर जो कंट्रोल और विजिबिलिटी है वो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लोगों का काम होता है कि वो मेंटेन रखें. और यूज़र्स की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हो सकता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि बजाय के अटैकर्स अटैक करें फायरवॉल्स को और आपके पैरामीटर को ब्रीच करके आएँ, वो ये कोशिश करते हैं कि यूज़र को इन्फेक्ट करें और उसके लैपटॉप के थ्रू फिर इंटरनली सर्कमवेंट करते हुए तमाम पैरामीटर के सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इंटरनली उसको करें, पिवट करें और अपने सिस्टम्स को एक्सेस करें. नाउ दिस बिकम्स स्पेशली ट्रिकी बिकॉज आपके ऊपर आप एक लेवल ऑफ ट्रस्ट रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने यूज़र्स के ऊपर, और उनके यूजर्स अगर उन्हीं के क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश करना कि ये हमारे लेजिटिमेट यूज़र की एक्टिविटी है या किसी अटैकर की है जिसने उनका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है. सो ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर पूरा करती है. और अगर आप ये पर्पल साइड पे देखें तो अगर कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है या लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट स्लाइड पे वेरी क्विकली, अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो है सिम टूल, which is basically security information and event management tool. It's one single pane of glass which is intended to show all of the security related data जो कि आप यूज़ कर सकें. अगर आप देखें इस डायग्राम को तो इसमें फायरवॉल के इवेंट्स वही जो पहले हमने एक्सप्लेन किया है, एंटायर वायरस, नेटवर्क्स, जो भी आपके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लगे हुए हैं उन तमाम से लॉग्स और उसका जो डेटा अलर्ट है वो सब सिम के अंदर आ रहा है, जिसको राइट साइड पे आपकी सॉक के जो आपके एनालिस्ट हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं 24/7 बेसिस के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडवाइजेस दे रहे हैं या रिमीडिएशन एक्शंस ले रहे हैं. सो दिस इज़ वन सिंगल पैन ऑफ ग्लास जो कि ब्रेन ऑफ द होल सिक्योरिटी ऑपरेशन के तौर पे काम करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स हैं लास्ट में. ये सिम इट्स अ डम पीस ऑफ हार्डवेयर. अगर इसके ऊपर इसको ऑपरेट करने वाली टीम काबिल नहीं है कि वो इसको फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सके, अगर उन्होंने इसके ऊपर यूज़ केसेस डेवलप नहीं किए हुए तो ये $1 million प्रोडक्ट भी आपके लिए किसी काम की नहीं होगी, ब्रीचेस तब भी होंगी.
तो it's as good as your team and the use cases which have been deployed there. इसलिए ये important हो जाता है कि हम जो टीम हायर कर रहे हैं वो skillful हो और उसके पास सिम का जो अपना टूल का नॉलेज है वो भी हो. जी प्लीज. I'm sorry, I mute myself sometimes to avoid any noise. So next question is, what kind of jobs in operations center, in the security operations center are available? Right. So पहले तो ये सवाल है कि हमें इसकी तरफ क्यों आना चाहिए या ये कि why it can be a lucrative option to get into SOC. इसकी जो entry bar है वो that is not as high as a pen tester, for example, or cloud security guy or any malware analyst or reverser. It's pretty easy to get in. आपको बहुत कम प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, कई रोल्स के अंदर कहीं पे आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती. तो अगर कोई इस तरह से इस साइड पर नहीं आ रहा है कि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, तो rest assured that there is some role for you in cybersecurity as well, especially on the SOC side of things. The compensations are handsome and इसमें shortage है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आगे चलें. यहाँ पे एक important disclaimer भी है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. It's not just the happy picture, so that there is some reality check also that we want to give you. ये जॉब आपके लिए नहीं है अगर आप 24/7 रोटेशनल शिफ्ट के अंदर काम नहीं कर सकते, अगर आप वीकेंड्स पे पब्लिक हॉलीडेज पे काम नहीं कर सकते, अगर और मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे आपको क्लाइंट साइड पे जाके डिप्लॉयमेंट्स करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है, इंटीग्रेशंस करनी है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है, हैंडओवर्स करने हैं. तो there is a good amount of traveling involved in this role as well. और ऑब्वियसली अगर आप ये चाहते हैं कि एक 9 to 5 जॉब की तरह एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग की तरह अपना डे क्लोज करें और घर जाके आराम करें फैमिली के साथ, तो सॉक की लाइन ऑफ फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है. कोई ना कोई अलर्ट्स आपको, कोई ना कोई इंसिडेंट्स आते रहेंगे जहां आपको रिस्पॉन्ड बैक करना होगा. अच्छी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली कंपनसेट किया जाएगा. और या दीज आर जस्ट सम ऑफ द डिस्क्लेमर्स. Okay, we'll go next. Okay, blue team. हमने पहले एक स्लाइड पे देखा कि मुख्तलिफ टीम्स हैं, तो ब्लू टीम्स के अंदर क्या क्या रोल्स अवेलेबल हैं? Sure. Maybe Walid, you can take these three first. Okay. Yeah, sure. अच्छा, ब्लू टीम्स ब्रॉस बेसिकली अच्छा सबसे पहले तो ये SOC एनालिस्ट का जो बेसिकली वर्ड है, अब होता ही है कि देयर आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजंस, देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर द SOC एनालिस्ट. ओके, अब इफ आई एम लाइक इफ आई टॉक अबाउट द गल्फ रीजन, ठीक है, हमारे पास मोस्टली होता है कि व्हेन आई गो फॉर द हायरिंग वी हैव डिफरेंट लेवल्स, लाइक वी हायर ऑन द बेसिस ऑफ लाइक SOC एनालिस्ट 1, SOC एनालिस्ट 2, SOC एनालिस्ट 3, okay, level 3 guys. Okay, so L1, L2, L3, these terms are usually used in the Gulf and probably I think so say it on in the Europe side it's entirely different terminologies which are being used for the job descriptions and everything. Okay, so the SOC analyst is basically uska job role jo hai, basically we have already defined कि SOC analyst is there to analyze the incident or analyze the events of it from the SIM. Okay, you have one window to monitor everything. अच्छा, अब सेम सोल्यूशन जब भी आपको अलर्ट या कोई भी इवेंट ट्रिगर करता है, ठीक है, तो देन द रोल ऑफ द SOC एनालिस्ट from L1 starts, okay, because he is monitoring. Okay, then we have different roles, the SOC analyst level 2 role, that is in basically, as I told you, in Gulf we have these kind of roles. Okay, so L2 is basically the incident responder. Okay, so L1 Walid, a second, I think we need to get to the next slide because there is important information there that you can echo back. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So the SOC analyst like performs monitoring. As I told you that monitor. So the job of SOC L1 is like to catch and dispatch to the next level. Okay. So the same thing happens from the L1, L2, and reach to the L3. Okay, guys. So mostly L3 guys जो हम hiring करते हैं, basically इसके consider करते हैं कि L3 guys should be like they are the SIM engineers. Okay, the threat analyst. Okay, then the malware analyst or the DFIR guys. They should come in the SOC engineering part. I think so. Walid, let me know when you want to move to the next slide, huh? Okay. So that was the basic difference. So the thing is that the duties of basically the SOC analyst like to do the monitoring,
take the escalation, handle escalation at the level 1, okay, prepare the handovers, and detect, give the false positive information to the SIM engineers, like to modify the any issue if issue is there, if the proper information is not in the event or the correlation rule. So these are the duties of SOC engineers, okay, L1. And plus also they contribute their knowledge, like gathering the information about the latest threats and provide intelligence information to the organization or to send out to the customers, okay. So these are the basic information. And plus also the SOC analysts do the health checks as well. In our organization, like how we are working is like our even SOC engineers, they do the health check and check if the services are up and running, and they add it and into the shift handovers and send it to the next team to look into it, okay. Can you move on, shall we? Okay. So I think so we have moved to the third part. Anyways, just keep it on the screen and we go to the next one. So for SOC manager, then we have SIM specialist. Yeah. No, I think we have missed one, which is SOC engineer. SOC engineer. Okay, SOC engineer is basically, as I already said, SOC engineer role, basically this is L3 team. You can say them the L3 team, okay. Yeah, basically they are responsible for the integration. They are responsible for managing the tools, creating the use cases, do the IR work, doing the malware or the DFIR job. So these are the guys who perform these jobs, okay. Shelby, you can move ahead. Can I add something here? देखें यहाँ पे अगर आप requirements देख रहे हैं साथ साथ typical hiring requirements for this role, so this is coming from our own experience, जो हमने खुद से apply किया या हमने खुद से interview किए उसकी बेस के ऊपर. तो देखें वो कैसे change हो रही हैं. SOC engineer के अंदर it's an engineer जिसकी requirement different है, उसको scripting आनी चाहिए, उसको automation आनी चाहिए, उसको Python, Go, Bash के साथ decent grip होनी चाहिए. थर्ड पार्टी APIs हैं, वो उसको यूज़ करना आती हैं, मैनिपुलेट करना आती हैं, और थर्ड इंटेल प्लेटफॉर्म के साथ एक्सपोजर हो. अब इसमें जो रिक्वायर्ड आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 से 3 साल का है. जबकि अगर आप पिछले रोल में देखें SOC एनालिस्ट के अंदर, तो ये वो रोल है जहाँ पे आप डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं. ये वाली ठीक है. इसमें अब आप देखें कि क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू एनालाइज विदाउट बायस, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम देखते हैं जब भी एक SOC एनालिस्ट, एक अच्छा SOC एनालिस्ट हायर कर रहे होते हैं. अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, लॉग टाइप्स की और सिम सॉल्यूशंस की पहले से कुछ हैंड्स ऑन है इसके ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ प्लस पॉइंट. And then obviously ability to work in night shifts, weekends, public holidays, that is also a requirement. और इसकी requirement 0 to 3 years है. कुछ लोग 3 साल तक भी grow नहीं करते SOC analyst L1 के level से. So it's like they can jump to a new role, or that's why this bracket. Absolutely होते हैं बिल्कुल. SOC analyst जो I have seen some people like they don't want to enhance their career, ठीक है, they stay where they are. तो ये होता है कि you need to have very good keen to learn and keen to get the knowledge, ठीक है. आप basically R&Ds करें और in your free time study some material out, so study the forums, okay. आपको Google के ऊपर बेतहाशा information मिल जाती है. अगर उनको आप इस तरह ही आप basically career में growth करते हैं, you have to learn, and it's ongoing continual improvement job. You have to improve your career by going through a lot of reading materials and forums and follow up with the forums and everything. ठीक है, next पे अभी जाएं, SOC manager पे जाएं या अभी किस पे? Yes, SOC manager. Okay, basically the role of SOC manager is like being to develop the SOPs and the procedures for the SOC. Okay, इसमें ये होता है कि हम लोग procedures define करते हैं. We make sure that the operations are running smoothly. If there's any incident, ठीक है, उसको lead भी करना पड़ता है sometimes, and even हम जो है मैनेज करना पड़ता है टीम्स को कि how they have to work in different shifts and to call them if there is an incident happens. Okay, even I myself sometimes participate in the incidents. Okay, मैं खुद अपनी टीम के साथ बैठता हूँ. So it's not like purely management and sitting job. Okay, it's like to have a responsibility on your shoulders to manage all the teams plus manage all the activities in the SOC environment. Okay, so he is basically a SOC manager is accountable for his operations center. He has to make sure one thing, that
whatever is going to happen, like should have to follow the SLAs, okay, and make sure that every incident or everything has to be on time, okay, and he has to be very much updated with all the functionalities what is going around. So it's, you know, a very accountable role. And for this, and I would like, as in the previous role we have mentioned that the time period, how much time is required to have this role, okay. इसलिए होता है कि आपको at least you need to have a good grip on all the domains of IT, okay. At least you should know the knowledge of different IT sectors, okay. There, okay, fine, how the networks and plus the operating systems work, okay. So comprised of that, okay, or then you need at least 7 to 8 years you should have experience, okay, on the field, okay. So this is basically the role of a SOC manager. So we can move ahead, I think so. Probably the SOC manager role. All right, so I'll very quickly skim through all these roles because time कम है हमारे पास. Slide आपके पास होगी और उसमें आप देख सकते हैं तमाम information मौजूद है. I just want to highlight one pointer in regards to the icon that you see on the screen, which are 10 on each slide. ये रिलेट करते हैं आपके रोल के साथ. फॉर एग्जांपल आपने SOC एनालिस्ट का पहला देखा, वहाँ पे कोई आइकॉन नहीं था. वो अमूमन सिम एग्नोस्टिक होता है, वेंडर एग्नोस्टिक एक एनालिस्ट होता है जिसको आप किसी भी सिम के ऊपर एनालिसिस के लिए अपॉइंट करेंगे तो वो आपको अपना एनालिसिस देगा. इसी तरह से SOC इंजीनियर की जब बात करते हैं तो वो इंटीग्रेशंस कर रहा होता है डिफरेंट सर्विसेज के साथ, जिसमें लोड बैलेंसर है, फायरवॉल्स है और इस तरह की सर्विसेज हैं. SOC मैनेजर के ऊपर भी आपने देखा कि कोई टूल नहीं था. अब सिम स्पेशलिस्ट एक ऐसा स्पेसिफिक रोल है जिसमें आप स्पेशलिस्ट बन रहे हैं टूल के, जिसमें आप टूल ऑपरेटर बन रहे हैं बेसिकली, लेकिन अ वेरी गुड टूल ऑपरेटर. इसमें जब जो टॉप लीडिंग सॉल्यूशंस हैं सिम के, वो आप देख रहे हैं सामने, स्प्लंक, माइक्रोफोकस जो कि पहले आर्कसाइट हुआ करता था HP, लॉगरिथम, क्यूरेटर, ये जो इंटरप्राइज ऑफिस इंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं जो हमारे कन्वेंशनल यहाँ पे बहुत अच्छा ये चलते हैं. आप राइट साइड पे देखें तो सुमो लॉजिक, RSA, एक्साबीम और नीचे कुछ ओपन सोर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स टू दीज कमर्शियल सॉल्यूशंस. तो अगर कोई सिर्फ टूल का स्पेशलिस्ट बनना चाह रहा तो ये देयर इज अ रोल फॉर हिम आल्सो, फॉर देम आल्सो. और इसके अंदर इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं अपनी अपनी वेंडर्स की जो कि क्लियर करनी पड़ती हैं. इसका एक फ़ायदा ये होता है कि मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि अगर स्पेसिफिक टूल सेट डिप्लॉयड है जो कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव परचेज करते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल स्प्लंक चल रहा है तो स्प्लंक के सर्टिफाइड लोग अगर उनको मिलते हैं तो उनको बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है और वो फिर बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्प्लंक के ऊपर एप्स डेवलप कर रहे हैं, उनकी डेव की सर्टिफिकेशंस जो स्प्लंक ऑफर करता है उसकी रिक्वायरमेंट है. कुछ हैं जो एनालिसिस का काम करते हैं, कुछ है जो इंडेक्सिंग और पार्सिंग पे काम करते हैं, कुछ उस पाइपलाइन को हेल्दी रखने पे काम करते हैं. इन तमाम की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं. खैर आगे हम जब इसकी लर्निंग के ऊपर आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन प्लीज. MDR analyst. So MDR is basically, if you have heard the word EDR, which is somewhat of a buzzword right now, अभी तक है. इसकी एक जो improved form है, एक innovative form है, that is XDR. तो अभी जो हमारे पास major players हैं उसमें CrowdStrike है, Carbon Black, Kaspersky, FireEye और Windows Defender ATP. Basically ये आपका endpoint डिटेक्शन एंड रिस्पांस का एक एडवांस प्लेटफॉर्म है. इसको आप नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस भी कह सकते हैं. इसमें जो एक डिफरेंस है आपके प्रीवियस एंटीवायरस के साथ या आपके सिम सोल्यूशन के साथ, वो ये कि आप सिक्योरिटी ऑप्शन सेंटर के अंदर बैठ के अगर कोई थ्रेट देखते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज देखते हैं, इन्फेक्शन देखते हैं, उसको आप खुद से रिमीडिएट भी कर सकते हैं. इसके अलावा और कोई टूल्स नहीं है जो कि इसको जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हो. तो इसके ऊपर भी सर्विसेज चल रही हैं. मैनेज MDR सर्विस भी, मैनेज EDR सर्विस को आजकल जो है वो MDR बना के सेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर. और इसहाक ये तो बता दे MDR के से क्या, किसका शॉर्टकट है ये लोगों के लिए? Manage detection and response basically. Yes, sorry. So EDR is basically the tool itself, which is endpoint detection and response. देखिए response का जो वर्ड है अब आया, पिछली जॉब रोल्स के अंदर नहीं आया. और जो MDR है वो मैनेज डिटेक्शन रिस्पॉन्स है. इसका मतलब ये है कि आप 4000 5000 आपके पास यूजर्स हैं, आप लाइसेंस लेते हैं किसी भी EDR का, उसको डिप्लॉय करते हैं एंड देयर इज आउटसाइड टीम जो बैठी हुई उसको 24/7 मॉनिटर कर रही है, उसी तरह सिक्योरिटी ऑप्शन सेंटर के अंदर बैठ के. अब ये वो लोग हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं EDR के, अनलाइक सिम टूल्स के. सो ये एक डिफरेंट जॉब रोल है. इसमें ये भी बता दें कि जो है ना EDR है ये कोई बिल्कुल बहुत पुरानी चीज नहीं है, ये कुछ सालों से ये शुरू हुआ है. Exactly.
उससे और पहले तो ऐसे ये थे ही नहीं, कोई नोबडी न्यू कार्बन ब्लैक कौन है और बाकी कौन है, तो ये भी कुछ सालों से ये शुरू हुआ है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस का, तो इट्स अ agreed. वेरी गुड, बेसिकली इट्स अ वेरी अब गुड। बेसिकली एग्जैक्टली अब जो है बेसिकली ये भी फील्ड जो है काफी प्रिवेल कर रही है, और इसके अंदर not only the EDR, they are also integrating the the sandboxing technology, network sandboxing, analyzing technologies, okay, और फिर उसको वो फिर MDR के अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दे यूजुअली अब जो सोल्यूशन आ रहे हैं MDR जो सर्विस प्रोवाइडर्स MDR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली डिटेक्शन फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस के, नेटवर्क साइड हो गया, आपके बेसिकली डेटाबेस साइड होगी, आपकी विंडो साइड होगी, ओके, फ्रॉम ऑल इवन द स्टोरेज साइड, ओके, वो हर जगह से जो है डिटेक्शन करके बेसिकली दे आर कमिंग अप विद द रिजल्ट। तो एमडीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इनहेंस हो गया मार्केट में। सो इन प्रॉब्ली इन कपल ऑफ ईयर्स हो सकता है कि जो है एमडीआर प्रिवेल कर जाए, और सॉक जो है बेसिकली वो, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ओके, अब डिटेक्शन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ यानी कि रिस्पॉन्स की तरफ ज्यादा चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ डिटेक्शन। तो डिटेक्शन जो है बेसिकली हो सकता है इन कपल ऑफ ईयर्स या आने वाले टाइम में वो कम हो जाए और रिस्पॉन्स को ज्यादा देखा जाए। ओके So गाइस, it's थोड़ा also सा Right. लेट्स मूव ऑन फास्ट, क्योंकि अभी काफी स्लाइड्स बाकी हैं, अब क्वेश्चंस Yeah, भी। sure. तो So very quickly going to the threat hunter role. So अब आप for example सिंगापुर की जॉब्स उठा के देखें अगर, तो ये आपको रोल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मिलता है उस रीजन के अंदर। ये बेसिकली एक ऐसा रोल है जो कि अपार्ट फ्रॉम EDRs, अपार्ट फ्रॉम सिम सॉल्यूशंस जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसके अलावा जो मोस्ट मॉडर्न थ्रेट्स हैं, मोस्ट मॉडर्न मैलवेयर हैं, उनको पकड़ने के कुछ टेक्निक्स हैं, और ये उसका रोल है जो कि स्पेशलाइज करता है। मेरे ख्याल में थ्रेट हंटर एक ऐसी जॉब है जो कि रिक्वायर करती है कि आप पहले सॉक के प्रोसेस से होके आए हो, उस रोल्स में गुजर के आए हो, और फिर वहाँ पर डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप इस स्लाइड से बाद में देख सकते हैं डिटेल में जाके। It's basically hunting for the things which are missed by EDRs or missed by SIM solutions. Okay, network security engineer. So this is one role जो कि काफ़ी देर से है मार्केट में। इसमें जो हमारे पास नेटवर्क इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिसमें फायरवॉल्स हैं, लोड बैलेंसर हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, उनकी सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेशन कैसे करनी है, इस तरह के जितने भी हमारे नेटवर्क्स जो इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रोल्स हैं, वो सारे टास्क नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर करता है। इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम हायरिंग फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, आई वुड hope that Center for Internet Security CIS इसके benchmarks available हैं for तमाम technologies that you can think of, all the popular ones, और उसके थ्रू आप फॉलो करते हुए, वो एक बेसिकली गाइडलाइन है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन को, सर्वर को या नेटवर्क अप्लायंस को हार्डन करने की, तो उसके साथ एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। सो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बेसिकली होता ऐसा है कि जब आप बहुत अर्सा एक ही टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल IBM है या VMware है, इवन AWS है, तो इनकी पूरी अरे ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर बैकअप सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिस्पांस, इसमें बहुत मतलब they want to sell you everything basically. So you become either Microsoft shop or VMware shop, और फिर आप स्पेशलाइज कर जाते हैं उनके सॉल्यूशंस के अंदर। और फिर अगर आपके पास एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने डेटा को प्रोटेक्ट भी करना है, डिटेक्शंस भी आपको सेटअप करनी है, आर्किटेक्चर अच्छा बिल्ड करना है, डेटाबेसेस की भी वहाँ पे चीज़ें, तो आप फिर तमाम एक ही वेंडर के तमाम सॉल्यूशंस लगा सकते हैं। दिस इज वन अप्रोच व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू। सो दिस इज वन अनदर रोल which is out there, but it requires a lot of experience. So yeah, DevSecOps. My favorite one so far. So this is something new. DevOps हम पहले से करते आ रहे हैं। अब DevOps को securely कैसे करना है, ये ज़्यादातर क्लाउड के अंदर ही एप्लीकेबल है। इसमें AWS, GCP और Azure लीड कर रहे हैं, 3 पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और दिस इज़ जस्ट अ फैंसी नेम फॉर क्लाउड सिक्योरिटी टू बी ऑनेस्ट। जितना मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, इसके अंदर हम वही चीज़ें कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही सेम है, हमारे हार्डनिंग है, वही मॉनिटरिंग है, वही डिटेक्शन है, वही ट्राइंग टू बेक सिक्योरिटी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट है, थ्रेट मॉडलिंग है, लेकिन क्योंकि क्लाउड है, इसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं और डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं। एंड स्पेशली अगर आपकी टीम के अंदर ये माइंडसेट नहीं है कि आपने सिक्योरिटी को बेक इन करना है हर चीज़ के अंदर, जो कि आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं, आपकी जितनी नई बिल्ड्स आ रही हैं, जो आपकी SDLC प्रोसेस है, आपकी CI/CD पाइपलाइंस हैं,
तो उनके हर एक फेज़ के ऊपर आप क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एक मेच्योरिटी मॉडल एग्जिस्ट करता है, OWASP DevSecOps मेच्योरिटी मॉडल दैट यू कैन गो एंड सी। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो गिट का पता होना चाहिए, AWS की सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी की नेटिव उनका हमें आइडिया होना चाहिए। स्टैटिक कोड एनालिसिस के टूल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं CI/CD पाइपलाइंस के साथ। कंटेनर्स का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। तो या ऑटोमेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर हैं। अगर आप क्लाउड की तरफ देखें, दिस इज़ प्रॉब्ली द हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर जो अभी तक जितनी भी डिस्कस की हैं हमने। डेवऑप्स की तरफ से भी आप इस साइड पे आ सकते हैं, और आप कन्वेंशनल सिक्योरिटी साइड से भी डेवसेकऑप्स में जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो let's take a look at very quickly career progression paths. अगर आप if you choose to go to security, take a security role और उसमें blue side के ऊपर, तो ये तीन मेरे ख्याल में बनते हैं आपके जो नेचुरल पाथ्स हैं। लेफ्ट साइड पे एक मैनेजरियल पाथ है, जिसमें अमूमन पाकिस्तान में कम से कम कंपनियां जो हैं वो ट्रेनी या इंटर्न के तौर पे हायर करती हैं, और इसी तरह फिर आप परमानेंट हो जाते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड यू क्लाइंब योर वे अप टू सिक्योरिटी लीड, SOC मैनेजर, head of security या director, and ultimately you retire at CISO or end up making your own company. और दूसरा, अगर कोई कहता है मैं मैनेजमेंट साइड बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं अपने रिटायरमेंट तक बिल्कुल टेक्निकल ही रहना चाहता हूँ, तो उसकी जो एक पीक है, उसकी मराज है, वो स्टाफ सिक्योरिटी इंजीनियर है। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि एक शॉर्टर पाथ लेते हैं, they try to specialize in specific vendors or technologies, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, और फिर वो उसी सोल्यूशन की प्री सेल में चले जाते हैं, कंसल्टेंसी में चले जाते हैं, और अमूमन दे एंड अप मेकिंग देयर ओन कंसल्टेंसी कंपनीज। तो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल प्रोग्रेशन पाथ्स जो कि आपको इन रोल्स में मिलेंगे। No, it's a very good summary, honestly. It's a very good summary. There may be Although, some more variations, but this is a very good summary for many people. yes, I mean, although it takes some time. Although it takes this is some a time. clear path जो कि आप अभी से फैसला कर सकते हैं कि where I want to end up, और उसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन रखें। Exactly. All right, let's move on to Okay, I think सब लोगों का काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कई चीजें लोगों ने देख ली माशाल्लाह। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या बेनिफिट क्या है इसमें, लेट्स टॉक नंबर्स कि क्या है, सैलरी स्लॉट्स क्या होती है मुख्तलिफ जगहों पे। श्योर, सो वेरी क्विकली आपको पाकिस्तान की जो सैलरीज हैं उससे थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। टिपिकल जो एंट्री जॉब्स होती हैं वो इंटर्निंग के तौर पे स्टार्ट की जाती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आगे कंपनीज के नाम भी आएंगे, ईब्रिक्स है, ट्रिलियम है, फ्रेंच प्लस है। इन तीन को तो मैं जानता हूँ कि ये पेड इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम है इनके, जिसमें इनरोल करते हैं, और इसमें स्टाइपेंड कैन वेरी फ्रॉम 10,000 to 25,000 पर मंथ। और इसमें कुछ लोग पार्ट टाइम भी आई थिंक कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऑफर करती हैं, कुछ फुल टाइम इंटर्नशिप में लेती हैं। और इसका मकसद ये होता है कि एज अ शैडो आप अटैच रहते हैं सीनियर्स के साथ, आप उनसे सीखते हैं, आप देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, और इस तरह से आपको बेसिकली एक्सपोजर मिलता है उन चीज़ों का जो आप ऑन जॉब सीख रहे होते हैं। अच्छा, फिर द नेक्स्ट स्टेप इज सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर कोई डायरेक्टली सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर जा रहा है, कुछ जूनियर का भी इजाफा करते हैं इसके साथ, तो उसमें जो रेंज है काफ़ी वेरिंग है। 30,000 भी कुछ जगहों पे स्टार्ट लेते हैं, कई कंपनीज है जो 70,000 भी पे करती हैं राइट इन द बिगिनिंग। और टिपिकल सैलरी फॉर सीनियर सिक्योरिटी गाय कैन वेरी बिटवीन 70,000 से 150,000 पर मंथ के दरमियान। और इसी तरह से सिक्योरिटी लीड है जो वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान अर्न करता है पाकिस्तान के अंदर, कंपनीज पे कर रही हैं। सिक्योरिटी मैनेजर और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डिपेंड्स कि वो कितनी वैल्यू टेबल पे ला रहे हैं, कितना उनका बेनिफिट है कंपनी को, उसी हिसाब से दे गेट पेड, एज सिंपल एज दैट। सो आई हैव सीन पीपल गेटिंग 130K एज अ सिक्योरिटी मैनेजर एंड आल्सो 500,000 पर मंथ भी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि लाहौर में सैलरीज जो सिक्योरिटी की हैं वो ज़्यादा हैं, उसके बाद कराची में आता है नंबर, और फिर सबसे जो कम सैलरीज हैं सिक्योरिटी की वो इस्लामाबाद में है। तो ये एक आई डोंट नो कैसे क्यों है, लेकिन ये की इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है। ऑलराइट, और जब आप किसी कंपनी के साथ, किसी अच्छी कंपनी के साथ इन रोल्स में काम कर लेते हैं, तो 2 साल बाद आपकी जो वर्थ हो जाती है वो मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि अगर लोगों को अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है तो बहुत सारे रिक्रूटर जो हैं वो उनको ले जाएंगे दुबई और सऊदीया, और बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं वो परेशान होगी।
Let's move on to the next slide. एक्चुअली वो तो ऑलरेडी हो रहा है इस वक्त हमारे गिस्ट में काफी ज्यादा अगर वीजा अवेलेबल हो तो हायरिंग तो पाकिस्तान से हो रही है, कराची से भी हो रही है। देखिए यही आइडिया कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो चर्न रेट है ये 2 साल या 3 साल तक अगर लोग यहाँ पे एक तरह से एक्सपोजर हासिल करते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर इसको फिल करने के लिए पीछे से हमारे पास इनफ सप्लाई आ रही है तो देन कंपनीज को परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. सो दिस इज कल्चर दैट आई वुड लाइक टू सी डेवलपिंग इन पाकिस्तान. इसमें मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉरी आई स्टार्टेड, मेरे ख्याल इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो है ना जैसे कंपनीज हैं दे शुड स्टार्ट इंटर्नशिप्स, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, इवन फ्री भी हो, 6 मंथ इंटर्नशिप 1 मंथ ईयर इंटर्नशिप लोगों को दें, स्टूडेंट्स को, उसमें बहुत फायदा होगा, कंपनीज को भी फायदा होगा, दे विल हैव चीप रिसोर्सेज और प्लस उसके साथ बंदे की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और साल के बाद इफ दे लाइक हिम दे कीप हिम, अदरवाइज दे गेट न्यू गाइज एंड दोस गाइज दे विल गेट बेनिफिट इंशाल्लाह फ्रॉम द मार्केट. या इसमें एक पॉइंट मैं बहरहाल ऐड करना चाहूँगा जो कि एथिकल है. अगर एक कंपनी आपको एक्सपोजर दे रही है जो आपको अदरवाइज पाकिस्तानी किसी कंपनी में अगर नहीं मिलने वाला, आपको ट्रेन कर रही है, रिसोर्सेज स्पेंड कर रही है, तो इतनी मॉरल और एक एथिकल हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम से कम 2-3 साल उनके साथ हम ज़रूर स्पेंड करें जब तक कि हम उनको पे बैक नहीं कर दें. बहुत से अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, लोगों ने काम स्टार्ट किया, कंपनी जब उनका कैरियर बिल्ड किया और उन्होंने 5-5, 6-6 साल कंपनी के साथ गुजारे, अपने रिप्लेसमेंट्स तैयार किए और फिर गए. कुछ ऐसे भी हैं जो कि जैसे ही उनको ट्रेनिंग्स करवाई कंपनी ने अपने खर्चे पे, सर्टिफिकेशंस करवाई एंड दे वो जस्ट स्विच, जो कि बड़ी बैड प्रैक्टिस है. और फिर ये चीज़ इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड साइन करवाएं, विच इज़ नॉट वेरी पोलाइट थिंग. तो इससे हमें बचना चाहिए. आई थिंक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज कंपनीज भी हार्श हो जाएंगी, ट्रेनिंग्स का कल्चर खत्म हो जाएगा और बॉन्ड्स आ जाएंगे जो कि नहीं कोई चाहता. वलीद एग्जैक्टली बेसिकली होता है कि बिल्कुल सैयद ने जो शिदाब ने जो बात बेसिकली आइडेंटिफाई की है कि होता है कि बेसिकली व्हेन द पीपल कम टू अस, ओके, समटाइम्स होता है कि व्हेन दे गेट ट्रेन्ड, ओके, दे सडनली लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वो दैट इज अ वेरी पेनफुल टाइम के एक बंदे को ट्रेन करके उसके बाद उसको जाने देना, इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर अस. उसको डिसीजन लेना भी मुश्किल होता है. लेकिन ये कि इफ यू वांट टू हैव अ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, यू हैव टू स्टे समवेयर, स्टिक समवेयर विद सम टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 years एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर गुजारे तो आपके एक रिज्यूमे और आपके करियर पर बड़ा अच्छा जो है एक बेंचमार्क हो जाता है, ताकि आप जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं कि दे डोंट आस्क यू दैट व्हाई यू लीव द कंपनी इन जस्ट सच शॉर्ट टाइम, या आपने 6 महीने 8 महीने काम करके क्यों छोड़ा. ठीक है, तो अगर आप इफ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप एक जॉब पे कंसिस्टेंट है 2 से 3 years, ठीक है, देन यू हैव अ वर्थ इन द मार्केट. ठीक है, और द ऑर्गेनाइजेशन जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू. हेलो. Right, maybe Walid, you can take up this next part as well. Okay, so about the job roles in the international market, like if you talk about the GCC, okay, so usually in the whole GCC, Dubai, KSA, Oman, Qatar, इसमें basically इसको जो current job level 1 engineer की जो इसको जो financials हैं वो around like 10 to 12 इस तरह चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि basically the good thing is that there are a lot of opportunities in Saudi market, especially if I talk about because Saudi market इस वक्त जो है digital transformation की era में चल रही है, and they have a plan to bring the digital transformation, and they want to have all the automated and this secure environment, cybersecurity environment, okay, everywhere. Okay, तो इसमें ये कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. ओके, so whoever wants to join the field in Saudi Arabia, like they can get immediate job opportunity, और उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. ठीक है, बाकी सिंगापुर मार्केट basically if you talk about like internationally, everywhere there is a requirement. Even अगर आप सिंगापुर, यूरोप, even Sayyid is in Europe, he knows the market के वहाँ पे तो क्या, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्किल्स हैं, तो वहाँ पे इसको क्या रिक्वायरमेंट है, जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, how the organizations are looking up for them, okay, and how they are hunting for them, like okay, they want to have the people, okay, but due to skill set जो है वो मार्केट में बहुत शॉर्ट है. प्रॉपर स्किल सेट ये नहीं कि आपने जस्ट 6 months काम किया, आपने कहा जो आ गया switch to another job. Okay, for the proper skill set you need to have at least have a 1 or 2 years experience. Okay, उनके लिए opportunities है मार्केट में. Even I usually एक चीज मैं quickly add करूं कि just tell us about the job market also, please.
इसमें जो टैक्स का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप सेविंग के लिए जा रहे हैं और आपकी ये मोटिवेशन है तो फिर आप जीसीसी रीजन में जाएं जहाँ पे 0% टैक्स है। अगर आप माइग्रेशन का लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, पीआर नेशनलिटी चाहिए आपको, तो फिर देयर इज़ अ वेरी हैफ्टी टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा, 30 to 45% तक जाता है। जर्मनी के अंदर फॉर एग्जांपल 42% है। मैरिड लोगों के लिए कम हो जाता है, लेकिन इट्स स्टिल प्रीटी हाई। तो 40,000 से 70,000 के दरमियान ये यूरोज में कैलकुलेट होता है पर ईयर, और उसमें से फिर माइनस होता है तकरीबन 40-45% टैक्स, और फिर आपकी जो टेक अवे है वो निकलती है। यूएस और रिमोट कोविड से एक चीज़, अगर सिल्वर लाइनिंग अगर मैं कहूँ एक अच्छी चीज़ आई है तो वो ये कि यूएस कंपनीज हिस्टोरिकली ज़्यादा पे करती रही हैं, हमेशा से वहाँ पे काम ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है। और अब अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, इट्स फ्री, वहाँ पे अपने जॉब फिल्टर सेटअप करें और लोकेशन में रिमोट डाल दें तो आपको रिमोट जॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। लोग अब एक्सेप्टिंग हो गए हैं टुवर्ड्स दीज जॉब्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी ट्रस्टेड इंटरनेट जो कि अपवर्क के ऊपर हायर करती है लोगों को। आई नो पर्सनली लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले वो 2 लाख पाकिस्तानी दे रहे थे एक शिफ्ट कवर करने का एक एनालिस्ट को। और जितनी भी रेमिटेंस बाहर से आती है, जितनी भी सैलरीज आती हैं, उस पर पाकिस्तान के अंदर कोई टैक्स नहीं है। So it's also a good sign. So even if you don't find any job, you can just go on Upwork and Freelancer, and there are a lot of gigs that you can try there. Okay, Ishaq, I skipped one slide. I'll go back because we were showing the international, but this one slide is important, the previous one. Sorry. Yeah, I was wondering where the companies were. No. This was before this. Yeah, this one. Yeah. Yes, this one. Okay, so very quickly, this is just to give you an idea, and I think there was a question in the chat as well regarding this. So these are the key security services provider companies in Pakistan. इसमें राइट साइड पे जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इन कंपनीज के साथ, जो एक्सपर्टीज मैं समझता हूँ इनके पास है, वो आप तीसरे कॉलम में देख रहे हैं। इनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, और अगर आप क्लिक करेंगे इनको, ये हाइपर लिंक्ड है तो इनकी वेबसाइट पे कैरियर पेज पे चले जाएंगे। ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं वो कराची में ऑपरेट कर रही हैं, और उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि जितने भी बैंक्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं, हेड ऑफिसेज कराची में हैं, उनके डेटा सेंटर कराची में है ज़्यादातर के। और दिस इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय स्टेट बैंक के उन सब ने सॉक डिप्लॉय करनी है, और ऑब्वियसली उनको हायर करने ही करने हैं लोग। तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं, कुछ कम्प्लीटली आउटसोर्स मॉडल में है, कुछ इन सोर्सिंग का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें देयर आर 3-4 पीपल वर्किंग फॉर एन MSSP जो कि डिप्लॉयड होते हैं क्लाइंट साइड पे। तो रेजिडेंट इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर है। तो आप लोअर राइट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट लिस्ट है कंपनीज की। उस पर क्लिक करेंगे तो देयर इज अ गिटहब पेज जिसमें नॉट जस्ट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, बल्कि जो कि सिक्योरिटी की प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रही हैं यूएस में, लेकिन बैक एंड ऑफिस पाकिस्तान में। जैसे सिक्योरिटी आए, बहुत एक मशहूर कंपनी है कराची की। इस तरह से उनके पास बहुत अच्छी पोजिशन हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। All right, let's move to, I think we have reached. I think there is one portion left which we have to discuss about the career certifications, probably. Oh yes, exactly. Yes, how do I prepare? अगर आप जो लोगों का सवाल हो कि हम कैसे तैयारी करें, तो उस पर हम क्या बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, आगे चलिए ज़रा। इसमें हम बेसिकली थ्रो कर रहे हैं आपको स्लाइड, ये इसको रिसर्च करें खुद से ज़रा। आगे नेक्स्ट कीजिएगा। Okay, so there are basically 2 approaches. I would request you to go back, please, one slide. So these are 2 approaches. एक है सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अपने आप को तैयार करना, और एक है अपने आप को टूल ऑपरेटर के लिए रेडी करना। सो ये डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। जब मैंने इनिशियली पाकिस्तान में हायर करना शुरू किया था, ट्रेन करना शुरू किया था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल यही था कि हमने एक वर्ल्ड क्लास टीम बनानी है, और वो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज डिलीवर करेगी और क्वालिटी काम करेगी, और किया भी। लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट टू इट जो कि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप शाइनिंग स्टार्स लेके आते हैं, आप 20-30 लोगों में से एक बंदा हायर करते हैं, फिर उसको 6-6 महीने तक जस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं, उनको एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं, और फिर वो इस काबिल होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट जैसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ कर सकें, मेलवेयर रिवर्सिंग कर सकें, या वो क्लाउड सिक्योरिटी का काम ऊबर जैसी, करीम जैसी बड़ी कंपनियों को डिलीवर कर सकें। सो आगे चलिए ज़रा अगली स्लाइड पे।
तो मैं एक दिस इज अ सैम्पल, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक थॉरो सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगर आपने इस तरह का तैयार करना है या अगर आपने इस पाथ पे चलना है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम कोर्सेज हैं। इसमें नेटवर्किंग के कुछ कोर्सेज मैंने शामिल किए हैं, प्रोग्रामिंग है, सिक्योरिटी की कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, सिक्योरिटी NSM नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, DPI इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये तमाम ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, फिर आप इस काबिल होंगे कि अपने आप को एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, थॉरो सिक्योरिटी प्रोफेशनल कह सकें, और फिर किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, जितने भी रोल डिस्कस किए हैं हमने। अगली स्लाइड पे जाइए, इधर आगे। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा जो मेरे व्यूज़ हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. We kind of experimented this thing, and it yielded good and bad results. So I think अगर हम globally compare करें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के लोग की पोजीशंस पे नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान के लोग बाहर बहुत काम कर रहे हैं. तो अगर हम उनको एक फास्ट ट्रैक SOC एनालिस्ट प्रोग्राम की तरफ लगा दें, जो कि बेसिकली एक अच्छा टूल ऑपरेटर हो, वो सर्टिफिकेशंस करे, किसी एक टूल को पकड़ ले, देखे जिसकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा है, जिस मार्केट में वो जाना चाह रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने स्प्लंक की एग्जांपल दी, उसी के ऊपर हम बिल्ड करें, या क्यूरेडार है. अब क्यूरेडार बैंक्स में चल रहा होता है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल, और वो अगर बैंक्स के लिए काम करना चाह रहा है, तो एक दो सर्टिफिकेशंस क्यूरेडार की डिप्लॉयमेंट की और एनालिसिस की कर लेता है, तो बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी उसे. क्योंकि मिडल ईस्ट में जो ऑफलोड कर दिया जाता है, इस तरह की जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती हैं, उसके वर्ड को लिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर CA सर्टिफाइड है, किसी वक्त में CH की इतनी वर्ड थी, तो उसको पेंटेस्टर फॉइल रख लिया जाता था. इसी तरह से क्यूरेडार या स्प्लंक की सर्टिफिकेशन है, तो उनके लिए एक बेंचमार्क है कि अच्छा ये बंदा जानता ही है जो टूल हमने खरीदा हुआ है, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है. सो आई थिंक दिस इज स्टिल वैलिड फॉर ऑल ऑफ द टूल्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन. इसमें EDRs भी हैं, इसमें SIM सॉल्यूशंस भी हैं. इनकी सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लेते हैं, तो एटलीस्ट अगर आपको गारंटी नहीं जॉब की मिलती, तो आपकी CV स्टैंड आउट करेगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ 100 CVs जो कि आपके पास HR लेके आएगा, जब एम्प्लॉयर के पास लेके जाएगा. Exactly, होता ही है कि बेसिकली सर्टिफिकेशन डू मैटर्स, क्योंकि व्हेन इन द गल्फ स्पेशली जो है, यहाँ पे बूमिंग इस सर्टिफिकेशन की बूमिंग काफी है. ठीक है, और ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो द सिचुएशन इन द पाकिस्तान, लाइक it's not easy to afford a certification like SANS. Okay, it's very expensive, okay, honestly. So affordability में नहीं आती, तो उसके लिए basically, but at least आप उसका ये कर सकते हैं, you can get the knowledge, आप you can find many materials, many trainings like regarding to DFIR, the threat analyst, and plus the reverse engineering and stuff like this. Okay, at least gain the knowledge. उसको पढ़ें, उसको go through एक दफा, ठीक है, at least to understand the concept. Fine, understand कि आप certification ही करें. Basic level की certification can help you out to to appear in the interview. Okay, आपको अगर आपने Splunk की certification की है, fundamental 1, fundamental 2, okay, you can appear in the interview. Okay, from there then you have your skills has to come out. Okay, आपकी स्किल जो स्किल सेट होगा, जो आपने जो, क्योंकि इल्म जो है वो कभी भी रहेगा नहीं जाता है. जो आपने पढ़ा है, जो भी उसकी ट्रेनिंग की है, चाहे आपने उसको इन हाउस किया, उसकी सर्टिफिकेशन की, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, you can get the job right away. I can guarantee you that. So the thing is that these certifications are ticket for you to compete. Okay, उसके बाद then your knowledge will come in the further. Okay, so कोशिश ये करें कि जितना हो सके इन चीज़ों को, जो भी आपको हमने आज सर्टिफिकेशन दी है, उसकी सर्टिफिकेशन ना भी करें, लेकिन एटलीस्ट उनको पढ़ें ज़रूर, उनके गो थ्रू कॉन्सेप्ट को समझें. क्योंकि if you have a good concept, then you will increase your skill set. Otherwise, taking the certifications and tagging yourself doesn't make any difference if you are not able to perform. ये चीज को याद कीजिएगा. हाँ जी, उसमें मैं कुछ ऐड कर दूं. हमने ऑलरेडी इस पे कुछ अच्छे से काम किया था. तो गिस्प ने हमने अपनी हमने गाइड बनाई थी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करियर गाइड. वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर. इसके अलावा हमने सेशंस भी किए थे, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे. तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाते हैं, तो आपको बाकी लिंक्स वहाँ से मिल जाएंगे, या हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे, gispp.org, gispp.org. चैट में आप साजिद लिख दें इसको, वेबसाइट को भी, तो कोई वहाँ से भी आप देख सकते हैं. वहाँ पे हमारी गाइड्स भी अवेलेबल हैं, हमारे ओल्ड सेशन भी अवेलेबल है, जैसे स्प्लंक पे भी सेशन वहाँ पे है. चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. ओके जी, हाउ इज द एक्सपीरियंस? सॉक में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अगली स्लाइड में आप देख go to the लीजिए. next one. So there is in reality this is different from what you must have planned. रियलिटी में होता ये है कि ऑल्दो ये बड़े डिफाइंड रोल्स होते हैं कि कई मार्केट्स के अंदर, लेकिन आपको यू गेट टू वेयर मल्टीपल हैट्स, आपको मल्टीपल रोल्स के अंदर इंगेज रहना पड़ता है, और SOC इज अ स्ट्रेसफुल जॉब.
but it compensates it accordingly. So just keep this in mind. Okay. Certifications and This training. is just like a cheat sheet which you can explore on your own. We have categorized all the, for example, जो sandbox environments हैं आपको practice करने के लिए, जो labs हैं free में या कुछ पैसों पे available, वो mention कर दी हैं. Blogs अच्छे, training and certifications. Hyperlink हैं, आप बाद में देख लीजिएगा इसको. Let's move to the question and answer session then. Okay, guys, we are done with the presentation. अब हम सब कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, साजिद आप देखें कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनका पूछ लें, या अगर किसी ऑडियंस ने कुछ और पूछना है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली. अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसाक, आप इसका ऑलरेडी आंसर कर चुके हो. क्वेश्चन ये है कि भाई इन्फोसेक बहुत बड़ी फील्ड है, हम रेड या ब्लू को चूज कैसे करें? इसका वैसे आंसर आप पहले कर चुके हो, आप दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो बेटर हो जाएगा प्लीज. थैंक यू. बहुत आसान है, आप दोबारा स्लाइड पे जाइएगा रेड और ब्लू वाली में और देखिएगा कि जो उसकी रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या वो मीट करते हैं या नहीं करते. अगर अभी तक आपने कोई किसी वेबसाइट को शेल नहीं किया, आपने कोई वल्नरेबिलिटी खुद से ट्राई आउट नहीं की, वर्क स्वीट के ऊपर आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की, तो प्रॉब्ली आपका इंटरेस्ट नहीं है. सो दिस इज वन इंडिकेटर. सो डू नॉट फूल योरसेल्फ, मे बी SOC इज द राइट थिंग फॉर यू. डू नॉट स्पेंड टाइम इन पेन टेस्टिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. थैंक यू सर. वलीद भाई, आपसे एक क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशंस को SOC इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, या आप अगर एक SOC करते हो, क्योंकि आपका माशाल्लाह से सऊदी रीजन में, मैं इस क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सऊदी रीजन और पाकिस्तान रीजन में आपको आइडिया है बेटर कि भाई ये कौन कौन से प्रॉब्लम लोगों को फेस करने पड़ रहे होते हैं अगर वो SOC बनाते हैं तो. देखिए, चैलेंजेस बेसिकली जो SOC इम्प्लीमेंटेशन किया है वो तो बहुत बेसिकली काफी होते हैं. ठीक है, इन द स्टार्ट usually you face a come up with when the time of implementation, सबसे पहले तो होता ही है कि आपको टीम बिल्डिंग चैलेंज होता है आपके सबसे बड़ा. ठीक है, आपको प्रोसेस बिल्डिंग जो है वो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. ओके, एंड देन कम्स to have the contribution from the other teams. This is the other main challenge what we face. Okay, and then comes the maturity level. जब हम SOC start करते हैं तो then we have look for the maturity level, how in what time we can mature the SOC. Okay, these are the top challenges, like or you can say a bird eye view challenges जो हमें start में मिलते हैं. ठीक है, and then like at least or plus secondly expectations. सबसे बड़ा issue होता है expectations का, कि जो अगर आप किसी customer के लिए काम करें तो customer has lot of expectations from you. Okay, you can just start giving out everything in just 1 or 2 days, or you can give it out everything in just 1 week, and you can make the process mature and your SOC mature, and you then start you're doing this and that. Okay, so one thing I want to tell you guys. Okay, see, SOC or SIM is not a magic box. Okay, first you have to understand this thing. It's not a magic box. Okay, कि आपको हर चीज बता देगा कि यहाँ पे ये चल रहा है या इस environment आपके Windows environment में ये चल रहा है. ठीक है, until unless if your solution is not properly configured, use cases are not properly configured, you are not getting the required information. Okay, you cannot come up to the maturity level. So ये basically challenges होते हैं for the SOC to establish. But once all these challenges are addressed, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि definitely you come up in a state where your stress is less. Okay, and you work on the operation part. Okay, so for a one SOC, at least 6 months are required to reach to level 1 or level 2 maturity level. ठीक है, so this is one of the major thing. थैंक यू वलीद भाई. शहजाद भाई, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है. बाकी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा एडवांस लेवल के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो उसमें हम फिर इंशाल्लाह उनको कंटिन्यू करेंगे, मेरी सजेशन है. ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन टुडे. ठीक है, इसमें आप फिक्र ना करें, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह. हम तो पहले भी कर रहे थे, मतलब ये काम कर रहे हैं. तो टुडे जो आज का सेशन हमने किया है इसीलिए किया कि इसके हमें काफी रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा. तो इंशाल्लाह हम इसको अभी रिकॉर्ड हमने कर लिया है, तो इसको आज अपलोड भी कर देंगे. आपको अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप वहाँ पे इसको लाइक करें ताकि वहाँ से, और उसके बाद जहाँ वहाँ पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, प्लस यूट्यूब पे होगा. ठीक है जी. तो सब फहीमुद्दीन फारूक की बात कर रहा हूँ. जी 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 जी. अच्छा, मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. इज इट पॉसिबल कि लाइक जिस्प को अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करें
और हमारे पास काफ़ी इन्फोसेक प्रोफेशनल जो भी पाकिस्तान के मार्केट के अंदर थोड़ी हाई पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ कोई एक कोई ऐसा रिलेशन बनाएं कि इन्फोसेक या SOC एनालिस्ट या इस टाइप की जो भी कोई अपना पोजीशन निकलती हैं, वो उसको अपना हम कुछ सीवीज प्रोवाइड करें, हम अपना सीवीज फिल्टर करके दे सकें। तो इस लेवल के ऊपर हमने कभी सोचा है या मतलब कोई बात ऐसी हुई है या चल रही है? नहीं, हम ये अनऑफिशियली होता है, अनऑफिशियली है। जैसे किसी कंपनी में वैकेंसीज आती हैं तो वो हमारे ग्रुप्स के अंदर लोग पूछते हैं, वहां से लोग अप्लाई भी करते हैं। इसको ऑफिशियली करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी तो नहीं है, जी ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसमें हम किसी किस्म का पैसा कोई वो नहीं हम चाहते इन्वॉल्व करना। जी जी तो जी अनऑफिशियली तो हम कह रहे हैं कि मतलब ऐसे अब जैसे भी कहीं कोई प्रोजेक्ट आता है, लोग हायरिंग करते हैं तो वो गिस्ट के फर्स्ट कोशिश होती है कि वहां से बंदे देखें। तो ठीक है। हो तो रहा है, लेकिन इसको डेफिनेटली इसको हमने फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। और I can probably add something here, Shazad bhai. If you are representing some university or any educational institution, let me tell you that there are some very good universities जो कि हर semester जो हर graduation के वक्त complete CV books बनाती हैं और वो send करती हैं different security companies को, open houses पे invite करती हैं, और वहाँ से हमारे बड़े large size intakes भी आए हैं। For example, MCS की there's a good example, EME है। तो वो बड़ा क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये काम हो रहा है। तो हाँ, सर ये बता दें यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी इस मामले में जो अच्छी हैं, अगर आपने अभी नाम लिया है। जी हाँ, MCS के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी की जो करिकुलम है और उसमें एक कल्चर है वहाँ पे जो कि काफ़ी देर से चल रहा है, जो कि आई रियली अप्रिशिएट। और इसी तरह से EME साइड के ऊपर भी सिक्योरिटी का काम हो रहा है। अब एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया ड्राइव हुआ है, वहाँ पे जो एक नई लीडरशिप आई है वो काफ़ी इसको सीरियसली देख रही है। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्पेसिफिकली कोर्सेज भी निकाल रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि पूरी पूरी डिग्रीज भी निकाली जा सके। रिफा में भी कुछ हाँ काम हो लेकिन रहा है मेरा ख्याल है। रिफा में एग्जैक्टली, हाउ कैन आई फॉरगेट रिफा हाँ में लेकिन ये राइज। इस लेवल पे जो काम हो रहा होता है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, ये जो है ये यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश ग्रेजुएट्स हो रहा होता है। मैं जो हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल बात कर रहा था। फहीम भाई, आप ना जो आपकी जहन में है ना मुझे शराब भी भेजिए, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड करूँ जो असल ईमेल में करते हैं, हम इस देखें। पर डिस्कस कर लेंगे। जी जी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देयर इज अ गैप। वो गैप ये है कि हमारी जो बेसिकली जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट वेल प्रॉपर्ली रिनाउंड अराउंड द ग्लोब, कि बेसिकली वो अपनी जो है रिक्रूटमेंट को जो है फर्दर जो है प्रोसीड लेके जा सकें और इंट्रोड्यूस करा सकें टू द ग्लोब, टू द अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट विप्रो, इफ यू टॉक अबाउट टाटा, दे आर वेरी बिग ग्रुप्स एट द मोमेंट। ओके, अब वो क्या करते हैं, इफ दे टेक द प्रोजेक्ट दे ब्रिंग देयर ऑन टीम। हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है विद पाकिस्तान के अंदर, और नन ऑफ द कंपनीज वर्किंग लाइक दिस, कि आप अपने जो भी एक्सटर्नल जो वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप ले सकें और बेसिकली उनको वहां पे अपनी जो है रिक्रूटमेंट हायर कर सकें। ठीक है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लैग करते हैं प्रोफेशनल मार्केट के अंदर। तो इस चीज के ऊपर जो है हमें जो है फोकस सब करना है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला, ताकि हम जो है अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएं और इधर इन गल्फ और इन यूरोप और अराउंड द ग्लोब, जहाँ पे जो है हमारी अपनी मैन पावर जो है काम करें। कोई और है सवाल या ना हम सेशन क्लोज सर? करें? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है और मेरा बस ग्रेजुएशन हो चुका है। तो मैं सर अभी ये CISSP की मेरी सर्टिफिकेशन चल रही थी और डोमेन 5 तक मैं अभी पहुंचा हूँ। तो हमारे यूनिवर्सिटी के एक सीनियर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप साथ में लीड इम्प्लीमेंटेशन ISO 27001 भी आप स्टार्ट कर लें। तो मैं इस हवाले से कह रहा था कि हमें CV बिल्डिंग के लिए क्यों किस तरह करना पड़ेगा, यानी एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में CISSP के लिए ये होता है कि 5 साल के बाद फिर आपको स्टेटस मिलता है पूरा, वरना हम एसोसिएट ही रहते हैं एक कुछ हद तक। मेरे ख्याल से ऐसी मैंने सुना है। तो मैं ये कह रहा था, कहने का मकसद ये है कि एज एन अनएक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें जॉब मार्केट में अपनी CV को किस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा? इसका मैं क्विक आंसर दे सकता हूँ। देखें, CI पहले तो ये देखा करें, थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया करें सीनियर्स के साथ कि जो आप सर्टिफिकेशन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं। CISSP जो है ये एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल सर्टिफिकेशन है जो कि आप एंट्री पॉइंट पे कर रहे हैं, जो कि आई थिंक गलत है। पहले आप वो देखें कि जो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर्नशिप के ऊपर, अगर आपको अनपेड भी मिलती है, एक बार मार्केट में इन हो, एक दफ़ा आपका फुट हो जाता है अंदर, तो फिर अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। फिर आपका अंदर खुद से एक्सप्लोर करें कि आप SOC में खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं या कंप्लाइंस साइड पे करते हैं।
अगर कंप्लाइंस में फॉर एग्जांपल आपने जाना है तो फिर सीसा है, सीसम है, इस तरह की लीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 27001 है जो कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली लास्ट ईयर को हिट कर रहे हैं CSSP को। नहीं सर, लेकिन इसके लिए कहने का मकसद ये है कि जॉब मार्केट में जाएं किस तरह, क्योंकि मैंने जितना भी चेक किया है इंटर्नशिप के तौर पे ज़्यादातर एक्सपीरियंस लोगों ले रहे होते हैं, मैक्सिमम भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है मिनिमम। तो एज अ बिगिनर लेवल हमें अगर CSP अगर ना जाए, हम आई तो जैसे बोला कैसे ISO 27000 पे चले हैं, तो उसके बाद जैसे वो करने के बाद सॉरी यहाँ पर सर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ट्रिलियम को, तो ट्रिलियम जो मेरे ख्याल से है वो आपको जो है वो एक्सपीरियंस नहीं लेती है, इंटर्नी के लिए वो आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं लेती है, वो आपसे सिर्फ ये रिक्वायर करती है कि आपकी डिग्री हो। समटाइम डिग्री भी नहीं मांगते हैं वो, बैचलर्स मांगते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, MS भी नहीं मांगते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो ट्रिलियम में अगर आप बिगिनर लेवल पर आप एंटर हो जाएं तो ट्रिलियम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाता है। उसके अलावा और हैं, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है इंटरैक्टिव ग्रुप में, तो अगर आप कोशिश करें तो आपको मिल जाती हैं। आप रिस्क एसोसिएट को ट्राई करें, कराची में है, अगर आप कंप्लाइंस में ही काम करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर दे कैन लेंड यू अ हैंड एंड कैन यूज योर। नहीं, मुझे लगता है मुनीब को ना अभी आइडिया नहीं इसने कहाँ काम करना है, लेकिन जस्ट किसी ने मुझसे बोला कि ISO कर लो। मुनीब ISO भी लाजमी नहीं है, वैसे नॉर्मली हम जो लोगों को रिकमेंड करते हैं ना, अगर बिगिनर लेवल की हम CEH रिकमेंड करते हैं या साइबर ऑप्स CCNA। सर कंप्लाइंस साइड में इंटरेस्ट है मेरा, कंप्लाइंस साइड। अच्छा, अगर इंटरेस्ट है तो फिर ठीक है, फिर आप उसको स्टडी करो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप उससे स्टडी होगा क्योंकि आपका फील्ड अभी एक्सपोजर नहीं है। हाँ, कोशिश करें इन कंपनीज के अंदर जो लिस्ट हमने है, लिस्ट हम बाद में पब्लिश भी कर देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन करके कोशिश करें हमने अप्लाई करने की, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तारिक रोड का रिस्क एसोसिएट्स है, अगर आप उनसे मिल लेते हैं तो उनसे बात कीजिए। आई थिंक दे कंप्लायंस उनका मेन बिजनेस ही कंप्लायंस है। अगर आप कंप्लायंस से रिलेटेड फील्ड जो है कंप्लायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं इस फील्ड को, ठीक है, वी हैव मेनी एक्सपर्ट इन फ्रॉम द कंप्लायंस साइड, प्रोबब्ली दे आर आल्सो इन द सेशन, ठीक है। सबसे पहले तो ISO 27001 की तरफ फोकस करें, ठीक है, टू अंडरस्टैंड how the standard works, okay. From there you can start like going for the CISM, okay. तो ये बेसिकली डायरेक्टली CISSP के ऊपर फोकस करना इन द बिगिनिंग इज, आई डोंट थिंक सो इज अ गुड आइडिया, ठीक है। प्रॉब्ली आप हो सकता है बाय हुक और क्रुक आप एग्जाम तो दे दें, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट और जो है आपका एक्सपीरियंस अगर ना हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर टू स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन गो फॉर द एडवांस लेवल। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys. Session. Sir, just a minute. 1 second, please. तो मैं क्लोज करने लगे हैं। I had a question. अब आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। This will be the last question. जी, थैंक यू सर। सर मेरा सवाल सर वलीद से था कि उन्होंने GCC कंट्रीज के बारे में बात की, सर उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि मैं वहीं से आया हुआ हूँ और अभी क्योंकि वालिद साहब उधर ही होते हैं, वो कह रहे हैं जी वो कंप्लीट साउथाइजेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली KSA में, KSA पे फोकस कर रहा हूँ, तो वो आगे जॉब सिक्योरिटी ऑफर होती है या नहीं होती, इसका काइंडली शॉर्ट आंसर मुझे बता दें। देखिए, जॉब मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि साउथाइजेशन, ठीक है, वो अप टू सम एक्सटेंट वो साउथाइजेशन यानी कि 30% 40% तक जा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60%, हु विल फिल द गैप ऑफ द 60%? तो उसके लिए बेसिकली जो है एक्सपेक्टेट्स को प्रेफर किया जा रहा है, यानी कि आप बिल्कुल बोलें कि 100% साउथाइजेशन तो कहीं भी नहीं चल सकती। तो इसमें ये है कि 30-40% तक साउथाइजेशन है, the rest is like 60 to 70% are expatriates, okay. Even I hired the people in the past like 1 month ago, and I usually like hired the expatriates, okay, even from some guys from who are from Pakistan, who are in Saudi Arabia, ठीक है, मैं हायर करता हूँ। तो ये साउथाइजेशन का जो है ये बेसिकली हाइप जो है 100% की तो नहीं है, ठीक है, 30-40% है, और वो ऑब्वियसली इट्स ए लॉ इन सऊदी अरेबिया, उसमें ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। सुहेब, उसमें एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, सऊदी में वीजे का मसला होता है, तो बाज़ कंपनीज के पास वीजा नहीं होता तो वो लोकल हायर करने को प्रेफर करते हैं, लेकिन सम केसेस में वीजे हो तो वो पाकिस्तान से भी हायर करते हैं। तो अगर आपके वालिद साहब यहाँ पे हैं तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं, फिर यहाँ के आप ट्रांसफर ले सकते हैं कोई जॉब ढूंढ के। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। वी हैव सम पीपल हु आर फ्रेश या 1 ईयर का था एक्सपीरियंस, तो उसमें थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है जॉब मिलने में। तो इट्स प्रेफरेबल कि आप 2-3 साल पाकिस्तान में जॉब करें, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें, फिर आप सऊदी आए, फिर आपको एक अच्छी वर्थ मिलेगी। अगर आप फौरन फ्रेश होकर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत हार्ड टाइम मिलेगा, एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर आपको शायद जॉब ही ना मिले।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट है लेकिन नॉट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, टोटली नॉट। थोड़ा सा स्किल सेट अपना बनाया, थोड़ा सा देखिए कि आपने जो है आप जा किस यू आर गोइंग इन विच डायरेक्शन, थोड़ा सा स्किल सेट हो ताकि एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप जो है अपने आप को जो अपने स्किल सेट को आप प्रेजेंट कर सकें। अगर इफ यू डोंट हैव नॉलेज एंड फ्रेश ग्रेजुएट कि आपको डायरेक्शन ही पता आपने किस जाना है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट इन द स्टार्ट। राइट सर, राइट सर। थैंक यू। ओके गाइस, अभी लोग अभी भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम खत्म कर रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू इसहाक, Thank you everyone for the participation. Thank you so much. And in the last, I want to say thank you to Subhani by you. And it's I have total respect, mad respect for you and the guest, this platform that you are running and managing it for so many different countries and so many people. It's not an easy job. So thank you for and just keep doing this. Thank you, Subhani bhai, and Kiani, really appreciate your support. No, it was very good. Alhamdulillah, we have like still we have 51 people, and after 1 hour 22, well, that's 1.5 hours almost. So inshallah, I think there will more, it will be, since we have good stuff here, so it will be useful even after we finish the session. Once we upload it, it will be helpful for many people. Sure. Thank you. Thanks everybody. Thank you everyone. Thank you. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. One second.